in destroying the enemy's capabilities. And this is a message that the Zionist entity must come to know. Any aggression against the Islamic Republic of Iran will have a dear cost, a big and high price. This is what happened. Against Iran, Praise and pride to the Iranian armed forces, the Iranian people. would totally get Simply, the armed forces are part and parcel of the Iranian people. in order to It is salvage the the Zionist Iranian regime. people that provided, Nothing out raised, of that and fostered those armed forces personnel. Today, we have a robust, mighty armed forces. sued in A second message of congratulations on the victory anything important. of our beloved Iran against the United States of America. The States President amplified their military operations, yet it later proved that they have been excessively exaggerating. It is known to all that the outward position of the Americans is failure, as they failed to destroy the Iranian nuclear facilities. That's why they continued with their attempt to magnify and amplify their attacks on our facilities in order to conceal their failure. Attacks on our facilities in order to conceal their failure. The Islamic Republic of Iran dealt a heavy blow to the American forces when they targeted and attacked the American military base in Al Udeid in Qatar, causing grave damage to the base. Those who amplified their attacks on our nuclear facilities came out to downplay our attack on their military base. What matters is that the Iranian armed forces have the capability to target and attack any position they desire at any point of time. Similarly, the American military bases will come under our attack if the American forces direct any belligerence against Iran. The third message is, by virtue of the unity, solidarity, and harmony among our people, the entire population, one voice, one hand, standing side by side, rising above their differences. They rose up and stood by the side of the Islamic Republic of Iran and their armed forces. Not only that, they praised and commended the united ranks of our armed forces. The Iranian people have demonstrated their mettle and their unity against the belligerence initiated against the Islamic Republic of Iran. It is a message that our people are one voice, one hand, one block.
The key message of my word here is that one of his speeches, the United States President said Iran must completely give up and surrender. Then the issue is not our nuclear endeavors, yet our surrender. However, these words are much bigger than the U.S. President himself. Iran is a deep-rooted empire, deep-rooted in history, with well-established civilization. That's why the word surrender is not within our vocabulary. The Iranian people mocked the words uttered by the U.S. President. Since the victory of the Iranian revolutions, the West, namely the United States, maintained animosity against Iran under many false pretexts. Sometimes they came up with, under the guise of human rights, women's rights. Now they are coming with other pretexts about our civil nuclear endeavors. Their ultimate goal is to see Iran surrendering. Former U.S. President did not publicly utter such words. Simply, these words are not acceptable at the global legal level. No president has the right to demand one sovereign people to surrender. The Iranian cannot and will not surrender. This is a key point in my message. Let the Iranian people know that the United States have deep-rooted animosity with Iran and the Iranian people, and they want us to surrender. This cannot and will not happen. Iran is mighty, established with deep civilization, deep-rooted in history, vast geography, and established culture, many-fold bigger than the United States civilization. No one could imagine that Iran or the Iranians could surrender. Preposterous this is. Demanding Iran or the Iranian to surrender would bring about nothing but mockery. Iran and the Iranian people are dignified and will remain standing tall by the grace of God the Almighty. And I pray to God Almighty to bestow blessings and grace upon our beloved homeland and our people. And may God have mercy on the Supreme Leader Al-Khamenei. May he rest in peace. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कल ये खबर दी थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मंजर से गायब हैं और आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई जंगबंदी के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर मंजर आम पर आए हैं और कौम से खिताब कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। जरा सा रुक जा, गर्मी की आई शाम, 41 का है दर्जा हरारत, तपती हुई धूप लगे प्यास, फिर फटाफट जरा ठंड मचा, ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले पे हो आइस, सीन में हो हाइप जो भी गैंग करे वाइप, जरा ठंड मचा
ताकि चिल गुजरे लाइफ सीना रहे ठंडा जैसे गले में हो स्प्राइट ठंड मचा Homage, a tribute to good living. अब जीते मौका कैश प्राइजेस जीतने का और अपने दोस्त को एक स्पेशल गिफ्ट या कोक बॉटल देने का। बस QR कोड स्कैन करके ढक्कन पर दिया गया कोड व्हाट्सएप करें। सो अपने जिगर के साथ शेयर अ कोक नाउ। हर कदम पे मैं बढ़ने की उम्र में कहीं पीछे न रह जाए। अब बुनियाद बनाने का नहीं, ग्रो करने का टाइम है। तो अब बेफिक्री का चिल जोन जो जी चाहे करूं मैं करता जाऊं ऑन माय ओन मेरे एक टैप पे चलती है अब दुनिया सारी ढूंढ कर भी ना मिलेगी ऐसी आसानी जब लाइफ मोबाइल हो तो कैसे होगा कोई बोर This is what we've all been waiting for full time मैश करो woohoo जरा सा रुक जा गर्मी की आई शाम 41 का है दर्जा हरारत तपती हुई धूप लगे प्यास फिर फटाफट तभी आ गया हूँ मैं आया करने शरारत जरा ठंड मचा ताकि चिल गुजरे लाइफ गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान गिब्स पास्ता Their biggest annual event is back at Hanif. Unbeatable deals on jewelry and watches. Limited time offer for 10 days only. Visit our stores in Lahore and Islamabad. Orient D3 IoT DC inverter air conditioners with innovative ampere lock technology. Highly efficient compressor. Give up to 80% energy savings. Orient. Living innovation. नेशनल रेसिपी मिक्सेस के नए जायके घर ले आइए तो फिर अब रोजाना अलग अलग खाने बनाने के बारे में क्या ख्याल है? खुर्शीद फैन जिसमें मौजूद जदीद तरीन PMSM मोटर और इसकी कूल मॉस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये बना 30 वोल्ट पर सबसे ज्यादा हवा देने वाला पंखा। खुर्शीद फैन, क्वालिटी की लगन। नेशनल रेसिपी मिक्सेस के नए जायके घर ले आइए तो फिर अब रोजाना अलग अलग खाने बनाने के बारे में क्या ख्याल है? ब्लैक ब्यूटी कलोन टैल्कम पाउडर जिसे लगाने के बाद किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं। ब्लैक ब्यूटी कलोन टैल्कम पाउडर। रबड़ी फालूदा हो या स्ट्रॉबेरी फालूदा, इतना मजे का कि बड़े भी बच्चे बन जाएं। लजीजा फालूदा मिक्स, मीठी है इसकी दोस्ती। Homage, a tribute to good living. New and improved Sensodyne Rapid Action 60 seconds में sensitivity से आराम देता है। मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. Sensodyne Rapid Action अब 50 रुपए की बचत के साथ। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त इज़हार ख्याल करें। 10 लाख है जो भी है इन्होंने इजाफा किया है। मैंने समझा सिर्फ 10 लाख था मगर मुझे बताया जा रहा है कि 12 लाख तक ये अवाम को फायदा दिया जा रहा है, सैलरी क्लास को फायदा दिया जा रहा है इस बजट में। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने सोलर टैक्स का जिक्र किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद मेरे मेंबर्स इस पॉइंट को उठाने के बाद हुकूमत ने हमारा यह मुतालबा माना है और सोलर टैक्स में 50% कमी लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे इस मेजर को। और भी पॉइंट्स है जनाब स्पीकर जिसके इस हुकूमत ने हमारे बात माने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस बजट को इन वजूहात की वजह से सपोर्ट करे। आखिरी बात जो इसने FBR को पावर्स ऑफ अरेस्ट की बात है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद और कल तक जो हमारा अमेंडमेंट्स थे वो हुकूमत ने माने हैं। हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि एक
अमेंडमेंट ये होगा कि ये गिरफ्तारी का पावर सिर्फ फ्रॉड इन सेल्स टैक्स पे होगा। ये गिरफ्तारी का पावर्स इंक्वायरी स्टेज पे ये हक नहीं होगा उनके पास कि गिरफ्तारी वो कर सके। और तीसरा, हमने इसको एक बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया है। तो जो भी हमारे पीटीआई दोस्तों ने एतराज करवाए हैं, उन तमाम एतराज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्बत सियासत करके सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन से एक नहीं, अपना इनपुट दे के, और हम हुकूमत का, वजीर आजम का, वजीर खजाना का शुक्रगुजार है कि हमारे बात माने हैं, और इसलिए हम इस बजट को सपोर्ट। थैंक यू जी। नूर आलम साहब टू मूव अमेंडमेंट, समीउल्लाह साहब टू मूव अमेंडमेंट, शाहिदा बेगम टू मूव अमेंडमेंट। बात हो गई ना जी, इकबाल साहब बात, शाहिदा बीबी अमेंडमेंट मूव कीजिए। सर साइलेंट फीचर्स अमेंडमेंट पे बात करने ने जी, ये 29 नंबर है जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिल्कुल क्लॉज 5 पे जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इज़हार ख्याल करे थे। ब्रेक। जरा सा रुक जा, गर्मी की आई शामत, 41 का है दर्जा हरारत, तपती हुई धूप लगे प्यास, फिर फटाफट जरा ठंड मचा, ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले पे हो आइस, सीन में हो हाइप जब भी गैंग करे वाइप, जरा ठंड मचा, ताकि चिल गुजरे लाइफ, सीना रहे ठंडा जैसे गले में हो स्प्राइट, ठंड मचा। ग्रो का छोटा 260 ग्राम पैक बनाए 2 लीटर भरपूर ग़िज़ाइयत सिर्फ 450 रुपए में। अब बुनियाद बनाने का नहीं, ग्रो करने का टाइम है।